Good evening class. Today's topic is the Java Servlet. Java Servlet is a Java program that runs on the Java enabled web server or application server. Java Servlet एक Java प्रोग्राम है जो कि रन करता है Java enabled web server और application server पे. It handle the client request. ये handle करता है client request को, प्रोसेस करता है उसको और जनरेट करता है रिस्पॉन्स डायनेमिकली और जनरेट द रिस्पॉन्स डायनेमिकली मीन्स इट्स हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट process them and generate the dynamic response. Servlet are the backbone of many server-side Java applications. Servlet is the backbone of many server-side Java applications due to their efficiency and scalability. First, work on the server side to manage the request response lifecycle. वर्क करेगा सर्वर साइड पे जो कि मैनेज करता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल को. कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट एफिशिएंटली. कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट एफिशिएंटली. सुटेबल फॉर बिल्डिंग रोबस्ट एंड स्केलेबल एंटरप्राइज एप्लीकेशन. सर्वलेट आर्किटेक्चर्स. Servlet architecture define how client requests are processed by the server using the servlet. सर्वलेट आर्किटेक्चर ये डिफाइन करता है कि कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसीड किया जाता है सर्वर के थ्रू सर्वलेट को यूज़ कर. इट फॉलो ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल वेयर द वेब सर्वर मैनेज एग्जीक्यूशन. ये फॉलो करेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को जहाँ पे वेब कंटेनर मैनेज करता है एग्जीक्यूशन. सर्वलेट आर्किटेक्चर वर्कफ्लो. Execution of servlet basically involve 6 steps. First, client send the request to the web server. Client send करेगा request को web server. Client send करता है request web server को. The web server receive the request. Web server receive करेगा request को. Web server pass the request to the corresponding servlet. Web server pass करेगा request को उसके corresponding servlet को. The servlet process the request and generate the response in the form of output. Servlet process करेगा request को और generate करेगा response in the form of output. The servlet send the response back to the web server. Servlet send करता है response को back to the web server. The web server send the response back to the client. Web server send करेगा response client को and the client browser display on the screen. Need the server side extension. The server side extension allow the dynamic web page generation by running the program on the server. Second, web server provide the API to help the developer to build these applications. Web server प्रोवाइड करेगा API जो कि हेल्प करेगा डेवलपर को बिल्ड करने के लिए ये एप्लीकेशन. जावा सर्वलेट पार्ट ऑफ जावा सर्वलेट आर ए की API. जावा सर्वलेट एक की API है फॉर जावा बेस्ड वेब डेवलपमेंट. सर्वलेट कंटेनर. सर्वलेट कंटेनर ऑल्सो नोन एज ए सर्वलेट इंजन. सर्वलेट कंटेनर आर ऑल्सो नोन एज ए Servlet engine is an integrated set of objects that provide a runtime environment for Java Servlet component. जो कि एक runtime environment provide करता है Java Servlet component. It is a system that manages the Java Servlet component on top of the web browser to handle the web client request. Service provided by the Servlet container. First, network service loads a servlet class. The loading may be from a local file system. Loading may be in a local file system, a remote file system, or other network device. The servlet container provides the network service over which the request and response are sent. Decode and encode MIME based message. Provide the service of decoding and encoding the MIME based message. Manage servlet container. Manage the life cycle of a servlet.
Resource management. Manage the static and dynamic response such as the HTML file, servlet, and JSP engine. Security service. Handle the authorization and authentication of resource access. Session management. Maintain a session by appending a session ID to the URL length. Step 2. Implementation of creating a basic Java servlet program. Install JDK kit. Install Apache Tomcat server. Install an ID like the Eclipse or IntelliJ IDE. Download the servlet API jar already included in the Tomcat. Create a dynamic web project in Eclipse. Open Eclipse, File, New, and then Dynamic Project.